Good morning, class 7. So today in our first class we are going to start the first chapter, representation of geographical features on topographical sheet. Already in class 6 you have read about the map, globe and all these things, latitudes, longitudes. So here we will notice about the topographical maps. Topographical maps show much details about small area. ये small area का ज़्यादा details देते हैं topographical maps. They are prepared on the basis of the detailed survey of an area concerned. जो area concerned है या फिर जो area को mention किए गए उस area का details मिलते हैं ये topographical maps में. Now use of colors on topographical maps. हम लोगों को दिखाई देंगे कि topographical maps में बहुत सारे colors use होते हैं. Topographical maps gives us magnified picture of a region or area of the earth. तो बड़ा सा कोई region और area का दिखाई देते हैं. As these are small scale maps, detailed depiction of both natural and human made features is possible. So natural or human made features both are possible. Different colors and symbols are used to represent these features. So बहुत सारे colors और symbols represent करते हैं ये features को. Colors used in a map they are known as the conventional colors. So जो सारे colors map में use होते हैं उसको conventional colors बोलते हैं. वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है. All over the world those colors are used for those particular things only. See the box there is given yellow. It's arable or agricultural land, white, west or barren land, brown, contour heights and sand features such as sand dunes, red, permanent settlement, grid lines, cart tracks and metal roads. Green color represent करते हैं forest areas, scattered trees, curbs and orchards. Blue represent करते हैं perennial water body all over throughout the year जिसमें पानी रहते हैं. So that is the perennial water body. And black color, it's latitude, longitude, national, international, state, then state, district and tehsil, taluk boundaries. So all these boundaries. Next, prominent survey trees, non-perennial streams, seasonal tanks, telephones or telegraph lines. Now use of scales for measurement. A map represents the spherical earth on a flat paper. Spherical earth को flat paper में map represent करते हैं. There are different kinds of maps that show different features of the earth. The aim of every map is to diagrammatically represent an area of the earth. So one can diagrammatically represent the area of an earth in its miniature form. Miniature मतलब छोटे form में और small form में. All maps are therefore drawn on a scale to give at least the truest representation of the earth. तो true representation करना ही चाहते हैं सभी map में. Map scale refers to the ratio of the distance on the map and corresponding actual distance on the ground. So map scale का मतलब क्या है? The ratio between the distance in the map. Map का distance divide by ground का distance. Now for example a scale 1:1 lakh would mean 1 centimeter on the map. ये represent कर रहे हैं 1 lakh centimeter और 1 kilometer on the ground. So a world map is drawn on a small scale. तो world map तो world बहुत बड़े जगह है तो उसको अगर map में draw करना चाहते हैं तो उसको small scale में ही draw करना पड़ेगा. The features look small on such maps and detail regarding a region cannot be shown. Now next is on the other hand a map of a smaller place like a city or village that show details. तो जो मैप में छोटे जगह को बड़ा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस जगह पे सिटी और विलेज का सारा डिटेल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, वेल सभी डिटेल्स मिल जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ स्केल क्या है? देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ स्केल. फर्स्ट इज द वर्बल स्टेटमेंट scale written in a statement form like 2 centimeter to a kilometer. It's called the verbal statement. It means that 2 centimeter on the map represent करते हैं 1 kilometer on the ground or 1 kilometer on the earth. Representative fractions क्या है? Scale can also be written as a representative fractions. For example 1:50,000. It means that it represents 50,000 centimeter or half kilometer of the ground. Next is the linear scale. Scale can be drawn on a line to show map distance equivalent to the ground distance. तो map distance कैसे equivalent है ground distance का वो linear scale में दिखाई देते हैं. A line is divided into equal parts. Each part represent करते हैं actual distance on the ground in meter और kilometer. Meter और kilometer में ये represent होते हैं.
Next is our measuring distances. In case of measuring distances, what we do, if you know the scale of a map, you can measure the distance of the ground or any two places. तो अगर पता है scale तो हम लोग measure कर सकते हैं. अब measuring distance का क्या होता है कि straight line में भी measure कर सकते हैं, curved line में भी measure कर सकते हैं. For measuring the distance in the straight line, what we should do, if we measure the distance of two places along a straight line, we first measure it with a divider. Divider से measure कर लेते हैं. Thereafter डिवाइडर को प्लेस करते हैं सेंटीमीटर स्केल में और वहां से हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाते हैं. इन केस ऑफ मेजरिंग अलोंग अ कार्व्ड लाइन, उसमें क्या होता है, व्हेन वी नीड टू मेजर द डिस्टेंस अलोंग द कार्व्ड लाइन, वी फर्स्ट मार्क 2 पॉइंट्स हुज डिस्टेंस टू बी मेजर्ड. कि कौन से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करना है वो पहले नोटिस करते हैं. देन वी नीड टू टेक अ स्ट्रिंग एंड होल्ड इट एट वन एंड. एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, उसको एक एंड पर होल्ड करना पड़ेगा और कर्व पाथ के ऊपर उसको वैसे ही चढ़ाना पड़ेगा. सो द थ्रेड ऑफ द स्ट्रिंग इज टेकन ओवर अलोंग द कर्व पाथ. को पूरा कर्व पाथ में उसको लगाना पड़ेगा. फिर कर्व पाथ मेजर हो जाए तो उस स्ट्रिंग को उठा देना है एंड देन वी शुड प्लेस दैट स्ट्रिंग ओवर अ सेंटीमीटर स्केल स्ट्रेट करके. तो फिर जो डिस्टेंस या फिर जितना सेंटीमीटर आएंगे दैट इज द map distance and that will be represented in the ground distance according to the scale. Next is our conventional signs and symbols. In case of conventional sign and symbols, maps uses a set of standard signs and symbols that are internationally accepted to depict certain features and characteristics. Certain features और characteristics भी depict करते हैं. These are known as the conventional symbols. Now, the information given on the topographical maps in the form of conventional symbol is categorized under the physical features, drainage, vegetation, land use, settlements, transport and communication, political boundaries and coordinates. Now, physical features में क्या है, contour lines depict करते हैं physical feature of a place. Drainage क्या करते हैं, drainage features include all natural and human made water features. Vegetation क्या है, the color green is used to represent different kinds of vegetation. जो green color होते हैं उसमें भी different kinds of vegetation दिखाई देते हैं. जैसे कि dark green हो that means dense jungle, light green हो तो उतना ज्यादा dense jungle नहीं है. Land use क्या है, the nature of the land, that is the various functions or purpose that humans apply to the available land is called land use. तो humans जो apply करते हैं available land के लिए that is called the land use and each land is depicted by means of color. सारे land color के हिसाब से ही चलते हैं. For example, yellow depicts करते हैं agricultural land and white denotes करते हैं barren land. Settlements क्या है, settlements may be small villages और large cities, each single red square. settlements क्या करते हैं, red square में represent होते हैं. तो सारे red square represent करते हैं heart. each red square represent the heart. For features such as the post office, post and telegraph office and police station, it symbolizes the PO, PTO and PS is used respectively. Transport and communication. transport and communication में क्या है, black lines are used to show railway tracks. डबल लाइंस रेड कलर रिप्रेजेंट करते हैं मेटल रोड्स में. टेलीग्राफ लाइंस आर सेट अप फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड डेपिक्ट इन द ब्लैक लाइंस. नाउ कार्ट ट्रैक इज मेंट फॉर यूज बाय कार्ट्स ओनली व्हाइल पैक ट्रैक्स इज यूज्ड बाय द पैक्ड एनिमल्स. पैक ट्रैक्स सिर्फ लोडेड एनिमल्स के लिए यूज होते हैं. देन कम्स अवर बाउंड्रीज. It's show in black with various symbols made up with the lines, dots and dashes. तो ऐसे टाइप के साइंस होते हैं. बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील और तालुक. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द टोपोग्राफिकल मैप इंडिकेट करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस. In every topographical map, another set of lines are drawn, that is the red, known as grid lines. So the lines that are drawn horizontally, they are called the northings, and those that are vertical lines, they are called the eastings. And after that you have the chart, मतलब जिसमें सारे symbols दिया हुआ है, symbol के पास उसका name लिखा हुआ है, वो chart जरूर पढ़ना. Okay, so up to this for today. Chapter end हो गए, हम question answer भी करा देंगे. Okay, thank you class.